फाइनेंस क्या होता है? तो फाइनेंस वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, वो है मनी। ठीक है, तो फाइनेंस में क्या होता है कि किस तरीके से हम अपनी मनी को एलोकेट करें, उसका मैनेजमेंट कैसा हो, ये सब फाइनेंस में आता है। ठीक है, तो फाइनेंस इज ऑल अबाउट द एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज इन्वेस्टिंग, बोरोविंग्स, लैंडिंग, बजटिंग, सेविंग एंड फोरकास्टिंग। तो जो हमारा मनी है, हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, एलोकेट करते हैं, ताकि हम जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कि इन्वेस्टिंग, ये सभी मनी से रिलेट करती हैं। इन्वेस्टिंग हो गया हमारा, हम कहाँ इसको इन्वेस्ट करें अपने मनी को। बोरोविंग्स, हमें कहाँ पर बोरोविंग की ज़रूरत है। ठीक है, जो हमारे पास पैसा, हम उसको इन्वेस्ट ना करके हम कहाँ पर हमें लोन लेना है, कहाँ पर हमें डेट लेना है। ठीक है, और लैंडिंग हो गया, कहाँ पर हम उधार दे सकते हैं। लैंडिंग का मतलब उधार देना होता है। ठीक है, बजटिंग, आप किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस और अर्निंग्स को मैनेज करते हैं, सेविंग्स को मैनेज करते हैं। ठीक है, एंड फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के लिए आप फोरकास्ट करते हो। ठीक है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जिसके लिए आप अभी से प्रिपेयर करते हो। ओके, सो हाउ एनी वन एलोकेट देयर मनी इन डिफरेंट थिंग्स एंड मैनेज देम फॉर अर्निंग, सेविंग एंड एक्सपेंडिंग। अर्निंग से मतलब क्या है कि हम इन्वेस्ट करते हैं जिस पे हमें अर्निंग्स मिलती है। ओके, सेविंग्स का क्या है कि हम सारा कुछ तो इन्वेस्ट नहीं करते, सारा कुछ खर्चा भी नहीं कर सकते। सेविंग हमारे पास होनी चाहिए प्रिकॉशंस के लिए। ओके, कुछ अनसर्टेनिटीज़ के लिए। एकदम से तो आप कुछ चीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट को आप लिक्विडिटी में चेंज तो नहीं करवा सकते ना, लिक्विडिटी मतलब कैश में। ओके, सो आपको ये सब जब हम इस चीज़ों को मैनेज करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंस कहते हैं। ओके, In this video, you are going to learn the roles of a financial manager. Let's start the video. The financial activities of a firm are one of the most important and complex activities. Therefore, in order to take care of these activities, a financial manager performs all the necessary financial activities. A financial manager is a person who takes care of all the important financial functions of an organization. The person in charge should maintain a farsightedness, in order to ensure that the funds are utilized in the most efficient manner. His actions directly affect the profitability, growth and goodwill of the firm. Following are the main functions of a financial manager. 1. Raising of funds. In order to meet the necessity of the business, it is important to have enough cash and liquidity. It is the responsibility of a financial manager to decide the ratio between debt and equity. It is important to maintain a good balance between equity and debt. 2. Allocation of funds. Once the funds are raised through different sources, the next important function is to allocate the funds. In order to allocate funds in the best possible manner, the following point must be considered. The size of the firm and its growth capability. Condition of assets, whether they are long-term or short-term. The method by which the funds are raised. These financial decisions directly and indirectly influence other managerial activities. Hence the proper allocation of funds is one of the most important activities. 3. Profit planning. Profit earning is one of the prime functions of any business organization. Profit earning is important for the survival and sustenance of any organization. Profit grows because of many factors, such as pricing, industry competition, state of the economy, mechanism of demand and supply, cost and output. A healthy mix of variable and fixed factors of production can lead to an increase in the profitability of the firm. These areas are all managed by the financial manager. 4. Understanding capital markets. They traded shares of a company on the stock exchange for continuous sale and purchase. It is understood that the capital market is an essential factor for a financial manager. Hence, it is the responsibility of a concerned person to understand and calculate the risk involved in this trading of shares debts. What is accounting? Accounting is an information science that is used to collect and organize financial data for organizations and individuals. Okay, perfect. Let's break down this definition. First of all, we said that accounting is an information science. It is concerned with analyzing,
collecting, and organizing information. But what type of information? Accounting organizes financial information. It is about money. It is quantitative in nature and measures money. Accounting isn't an abstract science. It is much more practical than theoretical. It's one of those things that you'll learn best by doing. The last part of the definition says that accounting serves organizations and individuals. How come? Well, as one can imagine, every firm needs to be able to organize the financial information related to its business. A firm has to know how much of a product it was able to sell, how much it cost to produce the product, and how much money it has in the bank. Similarly, an individual needs to be aware of their personal finances. If they don't pay attention to how much comes in and how much goes out, they may soon be in deep trouble. This video is part of the Google Data Analytics Certificate, providing you with job-ready skills to start or advance your career in data analytics. Get access to practice exercises, quizzes, discussion forums, job search help, and more on Coursera, and you can earn your official certificate. Visit grow.google/datacert to enroll in the full learning experience today. We've talked a lot about what data is and how it plays into decision making. So what do we know already? Well, we know that data is a collection of facts. We also know that data analysis reveals important patterns and insights about that data. And finally, we know that data analysis can help us make more informed decisions. Now, we'll look at how data plays into the decision-making process and take a quick look at differences between data-driven and data-inspired decisions. Let's look at a real-life example. Think about the last time you searched restaurants near me and sorted the results by rating to help you decide which one looked best. That was a decision you made using data. Businesses and other organizations use data to make better decisions all the time. There's two ways they can do this, with data-driven or data-inspired decision-making. We'll talk more about data-inspired decision-making later on, but here's a quick definition for now. Data-inspired decision-making explores different data sources to find out what they have in common. Here at Google, we use data every single day, in very surprising ways too. For example, we use data to help cut back on the amount of energy spent cooling our data centers. After analyzing years of data collected with artificial intelligence, we were able to make decisions that help reduce the energy we use to cool our data centers by over 40%. Google's people operation team also uses data to improve how we hire new Googlers and how we get them started on the right foot. We wanted to make sure we weren't passing over any talented applicants and that we made their transition into their new roles as smooth as possible. So after analyzing data on applications, interviews, and new hire orientation processes, we started using an algorithm. An algorithm is a process or set of rules to be followed for a specific task. With this algorithm, we reviewed applicants that didn't pass the initial screening process to find great candidates. Data also helped us determine the ideal number of interviews that lead to the best possible hiring decisions. And we've created new onboarding agendas to help new employees get started at their new jobs. Data is everywhere. Today, we create so much data that scientists estimate 90% of the world's data has been created in just the last few years. Think of the potential here. The more data we have, the bigger the problems we can solve, and the more powerful our solutions can be. But responsibly gathering data is only part of the process. We also have to turn data into knowledge that helps us make better solutions. I'm going to let fellow Googler Ed talk more about that. Just having tons of data isn't enough. We have to do something meaningful with it. Data in itself provides little value. To quote Jack Dorsey, the founder of Twitter and Square, every single action that we do in this world is triggering off some amount of data. And most of that data is meaningless until someone adds some interpretation of it,
or someone adds a narrative around it. Data is straightforward. Facts collected together, values that describe something. Individual data points become more useful when they're collected and structured, but they're still somewhat meaningless by themselves. We need to interpret data to turn it into information. Look at Michael Phelps' time in a 200-meter individual medley swimming race. 1 minute, 54 seconds. Doesn't tell us much. When we compare it to his competitors' times in the race, however, we can see that Michael came in first place and won the gold medal. Our analysis took data, in this case a list of Michael's races and times, and turned it into information by comparing it with other data. Context is important. We needed to know that this race was an Olympic final and not some other random race, to determine that this was a gold medal finish. But this still isn't knowledge. When we consume information, understand it, and apply it, that's when data is most useful. In other words, Michael Phelps is a fast swimmer. An important thing is कि investor invest क्यों करते हैं, and that is very important to recognize. ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. इन्वेस्टर्स को फ्रैंकली कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप और आपका बिजनेस कितना अच्छा करता है. उनको सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि क्या उन्होंने जो अपना पैसा आपके बिजनेस के अंदर डाला है उस पर एक रिटर्न बन रहा है कि नहीं. एंड दैट्स इट. दे आर इन्वेस्टर्स. जैसे स्टॉक मार्केट में पैसा डाल के स्टॉक को अप्रिशिएट करने का एक एक्सपेक्टेशन होता है और उसी पे लोग इन्वेस्ट करते हैं. सिमिलरली लोग प्राइवेट कंपनीज या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं इन द होप कि उनकी वैल्यूएशन बढ़ेगी और उसकी वजह से उनके पैसे को एक रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उन्होंने पैसा अपना नहीं डाला है, किसी और से उठाया है. दे आर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स. जो पैसा देते हैं इन इन्वेस्टर्स को, दे आर कॉल्ड लिमिटेड पार्टनर्स और एलपीज. ये कौन होते हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका फोकस होता है पैसे इन्वेस्ट करके ग्रो. तो ये एलपीज को ये इन्वेस्टर्स प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको एक सर्टेन रिटर्न देंगे अपने इन्वेस्टमेंट पे, एंड दैट इज द ओनली फोकस दे हैव, व्हिच मींस वो आप में पैसा तभी डालेंगे जब उनको ये एक्सपेक्टेशन होगी कि आप उनके पैसे को रिटर्न कर सकते हैं विद अ हायर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. दैट इज द बेसिस दैट यू नीड टू नो. दैट्स द सेकंड पॉइंट. इस पे आते हैं थर्ड कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. जब आप शुरू करते हैं देन द सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे जो एक बिजनेस और एक स्टार्टअप के लिए बिल्कुल सेम है is called friends and family. Bootstrap, our own money. एक ऐसा पैसा जो हम अपने माँ बाप से पूछते हैं कि थोड़ा सा पैसे मिल सकते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ. अपने दोस्तों से थोड़ा सा उधार ले लेते हैं, यार बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, कुछ पैसे मिल सकते हैं. अपनी कुछ सेविंग्स हो, अगर आप कुछ काम कर चुके हैं या कहीं और से आपको कुछ पैसा मिला हो तो उसको इन्वेस्ट करेंगे. बेसिकली एक बूटस्ट्रैप्ड वे. एक स्टार्टिंग कैपिटल जो चाहिए होता है एक बिजनेस को शुरू करने के लिए, एक स्टार्टिंग कैपिटल जो चाहिए होता है उस बिजनेस को रन करने के लिए. दैट्स द फर्स्ट स्टेज. इस स्टेज में आप जो भी कंपनी बनाते हैं उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं. एक प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, इसका मतलब आप ही करता हैं, आप ही कंपनी के मालिक हैं, तो आपके नाम पे वो कंपनी चल रही है. इट कुड ऑल्सो बी समथिंग कॉल्ड LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, विच मीन्स कि दो लोग हैं और एक लिमिटेड लायबिलिटी है. LLP में टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बिजनेसेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. इसमें और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है. अगर आप स्टार्टअप फंडिंग उठाना चाहते हैं तो एक प्रोप्राइटरशिप और एक LLP से आप स्टार्टअप फंडिंग मोस्ट सर्टेनली नहीं उठा सकते. आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलनी पड़ेगी, या अगर आप ऑलरेडी एक कंपनी बना चुके हैं प्रोप्राइटरशिप पे या LLP पे तो वो कन्वर्ट करके आपको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ेगी. एंड दैट इज द सिंपल बेसिस जहां आपको स्टार्टअप फंडिंग मिल भी सकती है फ्रॉम एलिजिबिलिटी परस्पेक्टिव. तो आपने बूटस्ट्रैप कर लिया है, अपने पैसे डाले हैं अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, एंड यू स्टार्टेड योर बिजनेस, इट्स बिगिनिंग टू शेप अप. एंड इसके बाद फर्स्ट स्टेज ऑफ फंडिंग जो होती है आफ्टर बूटस्ट्रैपिंग इज कॉल्ड द सीड राउंड. सीड का मतलब बीज, मतलब ये राउंड आपको बीज बोने के पैसे दे रहा है. इट बेसिकली सेज कि आपके पास एक आइडिया है, आपने उस पर थोड़ा सा काम किया है, आपने अर्ली टीम बना ली है, आपने शायद एक MVP या एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया है.
अब आप पहले कुछ बीज बोना चाहते हैं और उसके लिए आप फंडिंग उठा रहे हैं, एंड दैट्स कॉल्ड सीड फंडिंग। हिंदुस्तान में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो सीड फंडिंग करते हैं। यही पॉइंट आता है जहां आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास भी जा सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स, नाम से ही पता चलता है, ऐसे लोग जो आपकी मदद करते हैं, वो एंजल जैसे हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। बहुत सारे गुणी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आजकल एंजल इन्वेस्टिंग करती हैं, मैं भी करता हूं। बेसिकली अ वे ऑफ गिविंग बैक, क्योंकि हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं स्टार्टअप बनाने में, कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। सो देयर इज सम वे ऑफ हेल्पिंग द एंटरप्रेन्योर नॉट जस्ट विद आवर मनी बट ऑल्सो विद आवर एक्सपीरियंस। अगर आप एंजल इन्वेस्टर हैं तो यूजुअली लोग 5 से 30-50 लाख रुपए एट एन इंडिविजुअल कैपेसिटी का चेक देते हैं। तो अगर आप सपोज करिए 1 करोड़ रुपए उठाना चाहते हैं तो शायद 20 लोग आपको चाहिए जो 5-5 लाख रुपए के चेक काट रहे हों, या शायद 5 लोग चाहिए जो आपको 20-20 लाख रुपए दे सकते हैं, वो एंजल इन्वेस्टर्स हैं। बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो अब बहुत सीड फंडिंग के छोटे छोटे अमाउंट्स भी काट रहे हैं। पहले वो $1 मिलियन में काटते थे, लेकिन अब वो $100,000 जो कि अराउंड 70-75 लाख रुपए होते हैं, या $200,000 जो कि अराउंड 1.5 करोड़ रुपए होते हैं, उसके चेक भी काटते हैं। एंड देयर आर इनफ एंड मोर प्रोग्राम्स। जब आपका ये सीड राउंड हो जाता है, उसके बाद आता है द सीरियस मनी, विच स्टार्ट्स विद समथिंग कॉल्ड सीरीज A, B, C, D, so on and so forth। इसका सिंपल मतलब यही है, एक नॉमेनक्लेचर है, एक सिर्फ टाइटल करने की तरीका है। इट इज बेसिकली द टाइम व्हेन यू गेट इनटू द रियल मनी और फंडिंग बिजनेस। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे कि हिंदुस्तान में सिकोया हो गया, एक्सेल हो गया, लाइट स्पीड हो गया, सैफ पार्टनर्स हो गया, नेक्सस हो गया, मैट्रिक्स हो गया, कलारी हो गया। All of these are well-known people who have done really good amount of work in the funding business. ये जब participate करना शुरू करते हैं for your funding, then that becomes serious money. Series A, which is the first round of funding that comes from a VC or a venture capital firm, and then Series B, which is the second round, C, third round, D, fourth round, so on and so forth. हर एक स्टेज पे होपफुली वैल्यूएशन बढ़ रही है। हर एक स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट या जो फंडिंग आप रेस कर रहे हैं उसका साइज बढ़ रहा है। कोई सेट पैटर्न्स नहीं है, बट टिपिकली अगर मैं आपको दूं एक सेंस, सीरीज ए इन इंडिया कुड बी एनीवेयर बिटवीन $1 to $3 million of funding. Series B could be anywhere between $5 to $10 million funding. Series C could be anywhere between $10 to $30 million of funding. Series D could be anywhere between $30 to $100 million of funding, so on and so forth. ये बॉल पार्क हैं, सेट कोई रूल नहीं है, लेकिन essentially सिंपल भाषा में पहला राउंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपिटल सीरीज ए, सीरीज बी, सी, डी, ई। होप ये है कि अल्टीमेटली इन सब फंडिंग के बाद आप एक आईपीओ करेंगे। IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इट इज बेसिकली द टाइम व्हेन योर कंपनी गोज पब्लिक एंड लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज हिंदुस्तान में हो सकता है, हिंदुस्तान के बाहर हो सकता है, डजंट मैटर, बट दैट इज व्हेन द कंपनी बिकम्स पब्लिक, एंड फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट बिकम्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक कंपनी, एंड दैट इज हाउ द एंटायर फंडिंग सीरीज गोज। स्टार्ट्स विद बूटस्ट्रैपिंग, अपना पैसा, फ्रेंड्स एंड फैमिली, गोज टू अ सीड राउंड जहां एंजल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, सीड फंड्स आ सकते हैं, बहुत सारे ये वीसी कंपनियां हैं जो अपने सीड प्रोग्राम्स चलाती हैं, एंड देन द फर्स्ट राउंड ऑफ सीरियस मनी विच इज सीरीज ए, बी, सी, डी, ई, एफ तक आते आते देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ एन आईपीओ हैपनिंग, एंड दैट इज व्हेन द कंपनी गोज पब्लिक and the investors who had put in the money see a return on their capital. Midway भी आता है, but that is another story. This is a simple foundation of what startup funding nomenclature or startup funding stages are all about. एक और वीडियो में